just a deity in front of you? In the human form, yes. Like His Holiness the 14th Dalai Lama, we consider him to be a human manifestation of Bhagwan Avalokiteshwar, of the deity Avalokiteshwar. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग लेशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्स। आप लोग हमने सुपर रिएक्स पे बताया था कि हम लोग एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रू रिएक्स। वही चैनल है जिसके बारे में हमने आपको सुपर रिएक्स पे इन्फॉर्म किया था। तो इस चैनल पे 3 वीडियोस आएंगे रेगुलर, ऐसे ही जैसे सुपारी और ईगल पे पहले आया करते थे, ऐसे ही सुपारी पे 3 और ऐसे ही सुपारी पे 3 और ऐसे ही ट्रू रिएक्स पे भी 3। तो आज की वीडियो का हमारा टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज की हमारा पहला वीडियो है हिंदुइज्म वर्सेस बुद्धिज्म, द कोर डिफरेंस सिंपली एक्सप्लेन्ड बाय बुद्धिस्ट मंक। देखेंगे आपके साथ मिलकर ओरिजिनल वीडियो का लिंक TRS क्लिप्स का डिस्क्रिप्शन में है। इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पर हम करते हैं स्टार्ट। Your friends are scrolling through short content, but you, my friend, you're here to learn. Welcome to TRS Clips. Beginning with what you said about Hinduism and Buddhism being similar yet very different. I'd like to know. I think it will not be fair on my part to say that I can compare both religions or both faiths. Because Buddhism I know a fair bit, Hinduism I don't know that much. But from what limited knowledge that I have, and some of the swamis and the gurus and pandits that I know, the main difference would be that in Buddhism, and I may be wrong, but one of the main difference would be in the intention and the motivation of why we do certain things, like Havan, for example, fire puja, Agni Yag, chanting mantras, going to a temple, or even like eating, drinking, sleeping, and just breathing. In Buddhism, the idea is that samsara is full of suffering. The nature of samsara itself is suffering, and samsara is the deluded state of mind. That's what we call as samsara. Samsara is not a physical place, like you can say Juhu or Kolaba. It's not like that. Samsara is when your mind is confused and deluded, and your default emotions are that of ego, ignorance, anger, attachment, jealousy, greed, the negative emotions. So if your default emotions are negative, that's samsara. And if your default emotions are purified and is that of patience, compassion, love, generosity, so on, then it's nirvana. So in a nutshell, that's how we describe it. So in Buddhism, especially in the Buddhism that we practice, Mahayana and Vajrayana, we wish for all sentient beings, all beings, living beings, to be rid of suffering and to find everlasting happiness. And that's what we call enlightenment. To basically wake up from this matrix. Like the simulation of materialism around us. Yeah, because if I may expand upon it, from a Buddhist perspective, whatever we experience, whatever we see, whatever we feel, has 2 modes. One is appearance and one is its nature. We are caught up in the mode of the appearance. We don't go beyond appearance, and we don't see things for how they really are. We only see and feel things for how they appear. It's like a small child when he or she sees a movie and then cries at the end, "Daddy, wo doggy mar gaya," the dog has died, and the daddy will say, "No, no, 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 don't worry. This is a movie. Dog hasn't died." The parents see the movie, the appearance, but they also know the nature, the real side of it, the background. The child doesn't know. So we are like children. We're caught up in the display, and we don't see the real nature of how things actually are. We only see things for how they appear. If you remember these 2 modes, tomorrow when you have a meeting, when you go to the beach, when you play football, when you go to the gym, when you interview somebody else, anything, things start to make so much sense. And you don't get caught up with only the mere appearance, the maya. You go beyond that, and you understand everything is impermanent, everything is subject to change. People are not bad by nature. Temporarily, yeah, they get angry and all that. So it's okay. And sometimes it's okay not to be okay. You learn, perspective changes. So in Buddhism, our ultimate motivation is that all beings, sentient beings, be free from this kind of delusion, and to see the real nature of phenomena, and to be free from confusion and so on. What are the 2, Mahayana and Vajrayana? What are the differences? So basically in Buddhism, there are 3 different vehicles. We call them vehicles. They're like 3 different paths that you can go on. There is the Theravada path, which is mostly practiced in some parts of India,
I think in Maharashtra it's practiced quite a lot, and you have in Thailand, Cambodia. You've seen those monks, orange robes, Yeah. barefoot, and all that. They practice a very orthodox and very traditional form of Buddhism, and based very much on discipline. And their motivation and intention is mostly centered around themselves and their own small community. Now in Mahayana, it is expanded to all sentient beings, not only to yourself and to your monk community, but is including all the beings, because no living being wants to be sad, and every living being, whether it's human, dog, insect, want to be happy. That's why ants carry all that breadcrumbs. That's why dogs wag their tails. It's just there in nature. So Mahayana recognizes that, and Vajrayana is Mahayana, but it's like the turbo version of it with the nitro. So it's a very shortcut, fast path towards enlightenment. Like how we have Tantra. Yeah, and we Same practice logic. Tantra, we practice Kriya Tantra, Charya Tantra, Anuttara Tantra, like different kinds of practices. We practice Havan. So we have included a lot of practices and traditions from different faiths also. Also from Hinduism, we have adopted a lot of things. Also from, like you mentioned at the beginning, Bon or Shaman tradition, we have employed a lot of things. It's with the goal of nirvana. Yes, not only for yourself, but for all beings. So that might be the biggest difference, I think, between Hinduism and Buddhism. Yeah, fair. I mean, there is a thought in Hinduism about thinking for the welfare of society, Mhm. but I've not come across too many Hindu scholars, at least on the show, who've spoken about complete general Universal. universal positives. When you're a good person, when you do good deeds, you do accumulate a little more karma. When you pray, it's a little more karma. When you meditate intensely, it's a little more karma. When you do certain tantric rituals, it's even more. It's a volcanic amount of karma. Therefore, you're able to move down the path of enlightenment faster when you do certain rituals. Am I right till You're this very point? right. Okay. Yes. In the world of Hindu Tantra, there's a big significance of deities, which is basically a format of God. So you have the universal God, which is Parabrahm, and then you have a version of it which is understandable for the human mind. That same God expresses itself as Durga Ma or Krishna or Shiva or Hanuman. It's God, but expressing itself in a version that would be helpful to you based on your subjective reality and path. Okay. Now, what I understand is that in certain parts of the world that practice Buddhism, even you have deities Yes. like Tara. Yes. You want to give us a little bit about the Buddhist angle on deities and how does Buddhism generally look at deities? Because the assumption about Buddhism is that we pray to the Buddha when we talk about Buddhism. Like that is Shiva, I'm assuming. Yes. For a lot of Hindus, Shiva is the ultimate. Yes. For a lot of Hindus, Krishna is the ultimate. So I would assume that for Buddhists, Buddha is the ultimate. But then where is there a room for deities? Okay. So Buddha, when we mention the Buddha, we are talking about Siddhartha Gautama, who was a prince in ancient India and so on. We look at him as an inspiration. We look at him as a guide, as a sort of like a prophet, one who showed the path, at least in this eon, in this kalpa, in our age. So we pay homage to him, but we don't see him as a god. That is against Buddhist ideal. So we don't actually believe in a creator and a destroyer. We believe in the accumulation of positive karma and negative karma. Deities like Tara, Avalokiteshwar, Vajrapani, Manjushri, we have a myriad amount of deities, some peaceful and some wrathful. Really? Yes. So By wrathful, do you mean evil? no, by Just- wrathful I don't mean evil, I don't mean angry. By wrathful, I think the one way to put it would be to use the Indian anecdote of I love this word, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं. So Fierce. yeah, fierce, we just use the term wrathful, but not angry. They're not angry at you. It's like when a parent scolds you. When your parents scold you, it's not that they hate you. They want to harm you. They want to help you. They want to guide you. But at that time, you're too naughty. So you will only understand the language of air pulling if you're lucky, and a tight slap if you're not that lucky.
So in Buddhism, we have wrathful and peaceful deities. And deities, we see them as, okay, now if you talk about the highest level teachings of Buddha, they are manifestations of your own true nature. In a nutshell, they are certain manifestations of your own true nature, You're a talking about the reflection of your own true nature. Deities? Yes. Like Avalokiteshwar is the compassionate nature in a human form of your own true compassion. Tara is a manifestation of your true nature's activity. Manjushri, wisdom. Vajrapani, power, and so on. And then some of the deities, the similarities are very vague and very similar. But then the differences are very similar. But basically, that's how we see deities are. We don't see them as external beings residing somewhere and just blessing us. We try to invoke them by chanting their mantras, by visualizing them. And in doing so, we're not connecting with someone who's out there. We're connecting with our own primordial true nature, which we feel is enlightened. So our true nature itself, our core is good, it's clean, it's enlightened. It's just a wrapping. It's wrapped up. It's like a diamond Kohinoor wrapped up in a rag. If you have a rag over there, nobody would know there's a Kohinoor inside. So it's a bit like that. So God is inside you? Yes, you And can this- call it God, you can call it Buddha nature, Tathagata Garbha, Tathagat Garbh, the Buddha nature, you can call it enlightenment. Yeah. Okay. You've witnessed a deity in front of you? In the human form, yes. Like His Holiness the 14th Dalai Lama, we consider him to be a human manifestation of Bhagwan Avalokiteshwar, of the deity Avalokiteshwar. My own guru, His Holiness the 12th Gyalong Drukpa, we consider him to be the manifestation of different deities, but usually they are the manifestation of Avalokiteshwar, because we feel that the true nature of compassion manifests in human form in our society, not only as a Buddhist, but can be a Muslim, can be a Hindu, can be an atheist, can be a scientist, can be anything. So if you enjoyed this video, make sure you check out this playlist for more videos just like this. It's TRS Clips. वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था बुद्धिज़्म के हवाले से। हमने पहला ये वीडियो देखा, हमने हिंदुज़्म का जब सिस्टम स्टार्ट किया था, यानी कि इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था, तो जिस तरह उसको सुनते हुए फीलिंग आई थी, मुझे अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन मुझे वैसा ही इस बारी भी ऐसा लगा कि एक बिल्कुल नई एक्सप्लोरेशन की डायमेंशन है और बिल्कुल एक अलग तरह की चीज़ है। हम आते हैं इस्लामिक बैकग्राउंड से और हमारे लिए ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम आते हैं हिंदुज़म की तरफ, जब हमने वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो वो बिल्कुल ज़रा क्या बिल्कुल अलग लगा। हाँ, एक तो होता है ऑपोजिट, एक ये कि काफ़ी डिफरेंट लगा। ऑपोजिट तो ये नहीं कि अच्छा ये यहाँ करना है तो यहाँ नहीं करना है, वैसा हो गया। तो ये कि काफ़ी डिफरेंट था। और जो बुद्धिज़्म का वो भी बहुत डिफरेंट है। तो मतलब एक तीसरा एस्पेक्ट जो है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे उन्होंने ये कहा कि हमारे बुद्धिज़्म में ऐसा होता है, क्योंकि ये पहला वीडियो मेरा बुद्धिज़्म के हवाले से, मैंने आज तक कोई वीडियो बुद्धिज़्म का नहीं देखा। तो उन्होंने ऐसा बोला कि बुद्धिज़्म को हम लोग ऐसे समझते हैं अपनी लाइफ में, या हम इसको ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे एक बच्चा है, वो अगर एक मूवी देख रहा है तो उसमें एक कुत्ता जो है वो मर गया, तो बच्चा इमोशन हो गया, उसको लगा वाकई में कुत्ता मर गया, ये है वो है। हाँ, और उसका जो फादर है वो कहता है कि ये एक रियलिटी नहीं है, ये बस मूवी है, ये एक मूवी है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में हम लोग समझते हैं एज अ चाइल्ड अपने आप को कि हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं तो वो एक्चुअल में जैसे हमें नज़र आ रही है वो वैसी नहीं है। आज मोहम्मद अहमद और मैं भी बात कर रहे थे कि जो एक्चुअल में चीज़ें नज़र आती हैं वो वैसी नहीं होती, क्योंकि हमारी आँख उसको अलग तरीके से देखती है। जो एक्चुअल चीज़ है वो और है, हमारी आँख सुपरफिशियल लेवल पे जाके दिखती है, लेकिन जो उसकी कोर और जो उसकी डीपनेस है, जो उसकी रियल कोर है, जो अंदर का उसका जो खोल के आगे जो चीज़ है, जो हमारे आंखों का एक तरह का खोल है, उसके आगे की जो चीज़ है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, वो उससे बहुत डिफरेंट है जो हमें नज़र आती है। जैसे हमें पानी नज़र आता है तो पानी हम देखते हैं काफ़ी सारे, अब देखना पानी किस तरह है, अगर इसको बहुत सिंपल समझाएं कि पानी हमें कैसे नज़र आता है कि बहुत सारे एटम्स मिल जाएं आपस में तो हमें नज़र आता है पानी है, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल में क्या है कि वो एक्यूमुलेशन ऑफ बहुत सारे एटम है, यानी कि बहुत सारे एटम एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, तो उनका इकट्ठे होना एक असर पैदा करता है, एक इफेक्ट लेके आता है जिसका नाम पानी है। एक्चुअल में तो वो कुछ हो रहा है ना, वो उसका असर हो रहा है, एक्चुअल में वो पीछे एटम्स है, एक्चुअल में पीछे वो एक फिनोमिना अकर हो रहा है जिसकी वजह से हमें वो पानी नज़र आ रहा है। तो अब देखना, पानी को देखना एक सुपरफिशियल लेवल पे और फिर उसकी डीप
चीज़ों को समझना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग चीजें। तो अब पानी को देखते हुए हम पानी से हम चीज़ें निकालना शुरू कर दें अपनी लाइफ को समझने के लिए या चीज़ें और देखने के लिए, तो वो हम और तरफ निकल लेंगे। लेकिन जब हम उसको इस एंगल से देखेंगे कि एक्चुअल में वो क्या है, तो हमें एक अलग डायमेंशन नजर आएगी, एक अलग राह नजर आएगी। यानी दोनों के रिजल्ट बिल्कुल अलग अलग होंगे और उनके जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होगी और वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। ऐसे ही जैसे अभी हमने बात की कि हम जिस सोसाइटी से आते हैं, फिर हमने हिंदुइज्म का देखा, फिर अभी बुद्धिज़्म का देखा, तो कितना इंटरेस्टिंग है कि हम लोग बच्चे जो है अपने आप को बच्चा समझते हैं, तो इसमें ये कि हम उस चीज़ से अपने आप को निकालते हैं। ऐसे ही जैसे एक कोहे नूर का हीरा एंड पे जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है, कोहे नूर का जो हीरा है एक्चुअल में वो हीरा ही है, लेकिन उसको हमने इतने कवर चढ़ाए हुए तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं है। अगर वो रैंक में पड़ा, कहीं में पड़ा, तो हमें नहीं पता होगा। ऐसे ही हर इंसान इनलाइटेंड इंसान है अंदर से, लेकिन बात क्या है, मतलब कि उसके ऊपर खोल हाँ, उसके ऊपर कवर इतने सोसाइटी के चढ़े हुए हैं। हर इंसान की पोटेंशियल इतना ज़्यादा कि बंदे की मतलब वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये एक भरमार है एनर्जी का इंसान जो है, इससे वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, इन एनर्जीज को इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये कि उस खौल की वजह से वो इतना लिमिटेड है, उसको खुद को पता भी नहीं है इस चीज़ का। और ये चीज़, तो हर चीज़ इस तरफ ही जाती है। जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं एनलाइटनमेंट की तरफ, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हम इस रास्ते से जाएं, उस रास्ते से जाएं या किसी और रास्ते से जाएं। हमारा मकसद तो ये ना कि हमने एनलाइटन होना है, कि हमने सही राह पे जाना है। तो हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं कि तो ऑब्वियस बात है कि अगर हमने एक जगह पे जाना है, जैसे अब इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया में अगर मुंबई जाना है तो मुंबई को सूरत से भी रास्ता आ रहा है, मुंबई को अहमदाबाद से भी आ रहा है, मुंबई को और जगहों से भी आ रहा है, ऐसे ही है। तो इसी तरह जाना तो मुंबई है, तो जब मकसद क्लियर हो और राह कोई दूसरी भी हो सकती है, तो उस पर अगर हम राह पे बहस करने लग जाएं और मकसद को छोड़ दें, तो वो थोड़ा सा बड़ा अजीब सीन हो जाएगा, थोड़ा सा अजीब सीन हो जाएगा। तो ये इस हवाले से कि राहें तो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन मकसद अगर पीछे क्लियर है, तो मुझे लगता है कि बंदा इनलाइटनमेंट की तरफ जा सकता है, अपने अंदर की जो एनर्जी है वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक निकाल सकता है। तो मुझे लगता है कि वो रास्ते पे बहस हमें नहीं करनी चाहिए, हमें बस वहाँ पे पहुँचना चाहिए। हाँ, पहुँचना चाहिए, चाहे हम इस रास्ते से आ रहे हैं, उस रास्ते से आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, रास्ते डिफरेंट होंगे, हमें एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे, लेकिन ये है कि मंजिल तो सबकी एक ही है ना, कि अपने वो मंजिल क्या है, आसान लफ्ज़ों में, कि अपने जो ये एनर्जी का एक्यूमुलेशन एक बॉडी है, इसकी फुलेस्ट पोटेंशियल तक जाना बस। और वो फिर ऑटोमेटिक वहाँ से आगे चीज़ें चलेंगी। जो एक बार पहले भी हमने एग्जांपल ली थी आपको, वकास और मैं जब वीडियोस बना रहे थे, तो उसमें ये हमने बताया था ना कि इंसान बड़ी आराम से अपने हर्डल्स दूर कर सकता है, अपने सारे मसले ख़त्म कर सकता है, अपनी लाइफ बड़ी इजीली गुजार सकता है, अगर वो अपना पिछला बैगेज छोड़ दे कि सोसाइटी का दिया हुआ यार बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बड़ा ऐसा करना पड़ता है। अब उसने इतना सोच के काम स्टार्ट करना है कि हार्ड वर्क करना पड़ता है, आधा तो लोड उसने वैसे ही अपने माइंड पे लेके रखा हुआ है इन चीज़ों का। जब वो कहेगा यार काम करना है, तो बस उसने काम करना है, उसमें क्या हार्डवर्क, क्या ऐसा, क्या ये, क्या वो, क्या थकन, क्या ऐसा वैसा नहीं ना। वो एक जब इंसान है ही एनर्जी, जब एक काम नहीं कर रहा जो एक्चुअल में उसने काम करना है, तो वो छोड़ के वो कोई और काम कर रहा है, लेकिन वो अपना नुकसान तो कर रहा है फिलहाल, लेकिन एनर्जी उसकी उधर भी लग रही है, उधर भी लग रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन वहाँ से क्यों चेंज हुई? सिर्फ अपने इस माइंड के थॉट की वजह से, जिसको वो डायरेक्शन लेस कर देता है और खुद जानबूझ करके अपने उस बैगेज की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, खौल को ऊपर ले आता है। हाँ, उस चीज़ को कवर कर लेता है सारा। वरना अगर एक चीज़ करनी है तो इंसान करता है बस उसको, और वो तब आती है कि जब बंदा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है कि यार अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को कैसे जाना है, अपनी बॉडी को और इस तरह की मुख्तलिफ जगहों से एक्सपीरियंस हासिल करके, चाहे वो फिर रिलीजन का हो या स्पिरिचुअलिटी का हो या इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल जर्नी है और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मज़ा आया। उम्मीद है मोहम्मद आप ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा, उम्मीद है आपने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा वीडियो भी और हमारा रिव्यू भी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, TRS क्लिप्स को लास्ट में सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।